नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। मिलिए Volkswagen Virtus से सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी कीमत रखी गई है 11,22,000 स्टार्टिंग और ऊपर टॉप मॉडल आती है 17,92,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक चॉइस मिल जाएगा, मैनुअल का भी। फीचर्स भी भरपूर दिए गए हैं और इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वारंटी, माइलेज, इन सब को लेके भी हमने एक लॉन्च का वीडियो बनाया, ज़रूर देखिए। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर आशीष गुप्ता से, जो ब्रांड डायरेक्टर हैं Volkswagen इंडिया के। बात करेंगे कब आने वाली है ये गाड़ी, आपके घर तक कब पहुंचेगी, प्रोडक्शन में क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कब ये गाड़ी रोड पे दिखेगी, और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मिस्टर गुप्ता देंगे डायरेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं हाईटेक, मैं हूं अनिर्बान। Welcome to the show, sir. Thank you. So first question, how is the जोश, एक्साइटमेंट कैसा है? वर्टस मार्केट में आ चुकी है। Hi sir. Excitement is very high. In fact, last 2-3 हफ्ते से हम कस्टमर्स प्रीव्यूज़ कर रहे हैं across all our 150 touch points in India. मैंने भी I also traveled to Gujarat, I traveled to south of India. Almost 6 या 7 डीलरशिप्स में मैं जाके डीलरशिप टीम्स और कस्टमर्स को मिल के आया। एक्साइटमेंट और जोश इज़ वेरी वेरी हाई। जिन भी कस्टमर से इंटरेक्शन हुआ, they've just loved the car, you know. They've appreciated the size, the big in every sense this car is big in terms of design, features, performance, safety. It's just been an overwhelming love from customers. Exactly. That brings me to the question, मतलब initial response has been good, but I think मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी किया है कि why a sedan when the market is for SUVs? Why not a sedan is my question. You know, admittedly, market and not only in India, globally भी market जो है SUV body style की तरफ move हुई है। पर अगर हम एनालाइज करें मार्केट को कि ये SUVs की ग्रोथ किस सेगमेंट के एक्सपेंस पे हुई है, तो आप देखेंगे कि पैरेलल विद द ग्रोथ इन SUV बॉडी स्टाइल, इट्स द हैचबैक बॉडी स्टाइल दैट हैज़ गॉन डाउन। जो सेडान बॉडी स्टाइल है, सेडान बॉडी स्टाइल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें छोटी सेडान, मीडियम सेडान, बड़ी सेडान सब आती हैं। कांस्टेंट रही है इंडियन मार्केट में 11 से 12% पे। तो sedan, the love for sedans had not gone away. It is just that very exciting options for the customers were not available in the segment, and that is what we are trying to change with the Virtus. Definitely, I see an overwhelming response coming from customers, and with the customer preferences also moving towards personal mobility. More and more customers are actually buying additional cars in their families. And when you have additional 2 cars in the family, for an example, typically it will be 2 different body styles, the SUV and 1 hatchback or a sedan. So that's where I see a lot of opportunity available. I would like to think that the sedan body style has been a blind spot for all of us because we were focusing on the high growth SUV body style, and that is why this blind spot is now an opportunity for us. Exactly, very optimistic I think at the outset. सर, आपने डीलरशिप्स में देखा है, there has been response. अगर response को numbers के आंकड़ों में देखें तो if you can give us an idea of pre-bookings. तो हमने pre-bookings इसकी actually start की थी towards the middle of May, and in the last 20 days of pre-bookings being open, actually we have got more than 4,000 pre-bookings right now. Sir, what is the differentiator for Virtus in the market, because you have a close competition. आपके सिस्टर कंसर्न से और एक गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है, तो वर्टस को एज कहाँ मिलता है? I think the design language is very different. You know, Volkswagen design is quintessential and ageless, and it is a global design. So that is, I think, the biggest differentiating factor we have. But in terms of ground realities for customers as well, in each and every variant, you will see that we have small differentiating factors built in. For example, we will have the 8 speakers, the LED DRLs, and a 16-inch wheel right from the starting entry line. Going up to the GT Plus, which is a very clearly differentiated car in terms of the drivetrain with the 1.5 liter engine, the DSG gearbox, differentiating factors in terms of the GT badging, the black alloy wheels. So there's a lot which differentiates us as to brands. Very elementary question, कब
कस्टमर तक ये गाड़ी पहुंचना शुरू हो जाएगी? आज से हमारी गाड़ी की डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑलरेडी हमने अपनी जो डीलरशिप्स को इक्विप कर दिया है स्टॉक्स के साथ। इनफैक्ट लास्ट मंथ इटसेल्फ आई डिस्पैच क्लोज टू अराउंड 2000 कार्स टू द डीलरशिप्स। सो गाड़ियाँ डीलरशिप्स पे अवेलेबल हैं, आज से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे वर्टस का बहुत ज़्यादा फोकस हम देख सकते हैं, बट वन ऑफ द लोएस्ट इन द सेगमेंट्स। कैसे अचीव किया है आपने ये? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। अगर आप देखेंगे नॉट ओनली विद वर्टस, आई थिंक विद द होल इंडिया 2.0 हमारा फोकस था कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को एक इम्पॉर्टेंट टारगेट रखा जाए फॉर द प्रोजेक्ट। टारगेट रखने का मतलब है कि हमने फोकस किया लोकलाइजेशन पे। इंडिया 2.0 में सारे प्रोडक्ट्स पे अप टू 95% लोकलाइजेशन है। हायर लोकलाइजेशन मीन्स लोअर पार्ट्स प्राइसेस एज वेल। Then we focused on making sure that we have more and more child parts available, ताकि हमें पूरी assemblies change ना करनी पड़े। We introduced what we call the 4 years for the forever care with 4 years warranty, 4 years roadside assistance, 3 free services for the customers. We lowered our parts prices by 10 to 13% at the start of last year. We reduced our engine oil prices by almost 35%. We introduced packages for customers. For example, if you buy a 4-year service value pack for the Taigun, it's only 25,000 rupees, which is hardly 6,000 rupees a year. So these are measures which have already been implemented as a complete package, and these will be carried forward into the Virtus as well. बिल्कुल सर। मतलब बार बार आपने जिक्र किया टाइगून की बात, लास्ट ईयर आई थी एंड इट हैज़ बीन अ रनअवे सक्सेस फॉर द ब्रांड। व्हाट आर द लर्निंग्स यू हैव फ्रॉम टाइगून दैट हैज़ बीन अप्लाइड इन वर्टस? I think in terms of features, you will see it yourself, and I think it will be covered in your review as well. 2 or 3 feedbacks which the customers had given us in terms of ventilated seats availability that we have taken care of with the GT Plus now coming with ventilated seats. There were some feedback from customers in terms of the interior trims and interior, the materials used. That also we have tried to bring into the Virtus as much as possible, and going forward into the Taigun also those improvements will be reflecting. सर पिछले कुछ महीनों में आपके साथ बहुत बार मुलाकात हुई है एंड एवरी टाइम यू हैड एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 3,000 अ मंथ वर्टस सेल्स। क्या आप सेम जगह पे खड़े हैं या एक्सपेक्टेशन इज एक्चुअली सरपास्ड? नहीं, आई थिंक 3,000 is an optimistic expectation to the market, and I truly believe that is the potential of this car. Okay, मैं ये क्यों कहता हूँ ये भी जानना ज़रूरी है। पिछले साल जो प्रीमियम मिड साइज सेडान सेगमेंट है वो 95,000 कार्स की थी। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टस एंड विद आवर सिस्टर ब्रांड्स कार दिस सेगमेंट विल ग्रो टू अराउंड 140 to 150,000, 1.5 लाख गाड़ी तक ये सेगमेंट जाएगी। और मेरा रियलिस्टिक जो एस्टिमेट है कि वर्टस कैन वेरी इजीली गेट 20% ऑफ दिस सेगमेंट। That brings in a volume of 2.5 to 3,000 a month, right? But yes, 3,000 is a realistic expectation, but it is all dependent on the supply situation that we have, which continues to be constrained as of now. सर इस साल जो हमने ट्रेजेक्ट्री देखी है, obviously you have Taigun in the market, आपने टिगवान भी इंट्रोड्यूस की, वर्टस is here. What's in store for next 6 months? आई थिंक अगर आप देखेंगे, अगर हम पिछले साल हमने अराउंड 26,000 गाड़ी बेची थी, कंसिडरिंग दैट द टाइगुन वाज लॉन्च्ड ओनली टुवर्ड्स Q4. दिस ईयर आवर प्लान इज टू डबल आवर सेल्स, ओके, गो बियॉन्ड 55,000 cars. But again, as I said, I have to put an inverted commas around all my statements. It all depends upon the supply availability. Currently, I see shortages of almost 30 to 40% against my plan. सर एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में था पोलो। जी। Now, for multiple reasons, it had to be blocked, it had to be stopped. क्या आप उस गाड़ी को in terms of volume and popularity मिस कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, पोलो जैसी गाड़ी को आप हमेशा मिस करेंगे। पोलो ने Volkswagen ब्रांड को डिफाइन किया है इंडिया में। पोलो ने ऑल्सो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट को डिफाइन किया है इंडिया में। सो डेफिनेटली दैट इज अ प्रोडक्ट विच not only customers but we will also miss, and what Polo has done for us is give us a base of almost 400,000 customers, 4 लाख customers Polo और Vento के इंडिया में है, जिनके लिए with the new India 2.0 cars, Taigun, Tiguan, or rather the Taigun, the Virtus, and then going forward into the Tiguan, available है as a natural progression to grow within the brand. So I think Polo और Vento customers
because they know the DNA of the brand, they have loved our products, will now naturally progress into the Virtus and the Tiguan as well. So that is a good development for us as a brand, because we position ourselves as a premium aspirational brand, and I think we are now giving the customers products which meet those aspirations. बिल्कुल सर, कोई स्नीक पीक की कोई हाइब्रिड या कोई नई गाड़ी की प्लानिंग फॉर द इंडियन मार्केट? प्लानिंग तो हमेशा चलती रहती है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बिकॉज एज सुन एज यू finish one plan, you have to parallelly work on separate plans altogether. So plans काफ़ी सारे हैं, we are working on them, and at the right time I'll surely share with you. बिल्कुल सर. One final question is again with technology perspective. ADAS autonomous features आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से different products different segments में खेल रही हैं, चल रही हैं. Volkswagen globally has it. Yes. Any timeline for bringing it to India? Yeah, so it all depends on what kind of a price value proposition you can give to customers. As you said, globally these technologies are available with us. We would like to explore when is the right timing and what price points can we actually command by bringing those features in. Our focus has been on always providing a strong build quality, safety, and a fun to drive experience, and that is how we have positioned ourselves. We have never positioned ourselves as leaders in features. We would like to give a complete all-round package at a price point to customers. बिल्कुल. तो आपको सारी खबरें रिगार्डिंग द Volkswagen Virtus मिल गई होंगी, एंड कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसा लगा ये लॉन्च, मुझे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई प्रश्न भी रह गया हो वो भी आप नीचे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much.